हाँ, चौथा दिन है। आज हमारा 24 लेवल हो चुका है। चलो आज मेन मिशन करते हैं सबसे पहले। स्टोरी कितना बड़ा हो गया मैप ये। मेन स्टोरी किधर से होगी? ये रही। आज सिर्फ स्टोरी करते हैं। चलो इसने कुछ ढूंढने के लिए बोला है। बेस्टे गेमर वही कर रहे हैं, थोड़ा नए टाइप की गेमें खेलना चालू कर रहे हैं अभी ये सीरीज चल रही है, इसको थोड़ा देखते हैं इससे सपोर्ट कितना मिलता है अपने को। पे पीसी गेम भी चलेंगे अभी तो। गॉड ऑफ वार या फिर ऐसी वॉच डॉग GTA 5। भी तो इसकी स्टोरी चल रही है। अभी तक का सबसे फेमस कैरेक्टर है। ये अंधेरा अंधेरा हो गया। न्यू सिटी। These bombs, so heavy. If you want to find the Geo Archon, this is the only chance you'll get all year. अच्छा हुआ मैं ऑफलाइन ये Guess it's a सिटी good खोल thing Venti दिया। brought it up earlier. Otherwise, we definitely
definitely would have missed this year's Rite of Dissension. Might be today, might also be tomorrow. Look, we're already in Liyue, so let's go ask some of the locals. Oh, right. About the Geo-Archon Morax. Did you know the Mora that we use is named after this god? But it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo-Archon by that name. So we should refer to the Geo-Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. Mm-hmm. Welcome. Please take a seat. Woo! Rite of Dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuheng of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Ooh, Paimon knows this one. Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the 7 leaders of the 7 enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish you well on your travels. Liyue always welcomes you. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tianshui herself, Ningguang, has been acting secretly in the shadows. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Among the 7, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Fortune? So where can we see this Rite of Dissension anyway? You're not at all close. Not to mention that if I gave you directions, as foreigners, you'd get lost along the way. So better to head to Yujing Terrace, to the high ground. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best place for trying to communicate with deities, no?
Where has Master gone this time? Paimon heard that the best time to make और a wish Genshin is क्या हाल today, चाल? during the Rite of Dissension. Wanna give it a try? पीसी लेवल की है, इसकी ग्राफिक देख जरा। पीसी का गेम कोई बोल ही नहीं तो फ़ोन पे चल रहा है ये चीज़। तेरे मैं थोड़ा ग्राफिक लो कर रखा हूँ भाई। Oh, you also want a little Adepti luck होता है। too? Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great! Thanks! Your first time in Liyue? Actually, it's my first time to see the Rite of Dissension, too. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liu Xixing. Only those who have control in Liyue can preside over the Rite of Dissension. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Liyue's ancient mythical creatures. Ah, sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. Great! Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Whoa, look at all the people! We gotta get up front. We can't see squat back here. The hour is upon us. Rex Lapis have been killed. Seal the exits.
Geo Archon is dead? Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait. We got close. Are we suspects? Wait, where are you going? Oh no! There's a whole bunch of soldiers out there too! Your identity! You may not be the killer, but we can't let them get you! But can we even get out of here safely? अबे ये क्या मजाक है। क्या छुप के जाना है सबसे। छुपके 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 छुपके। तो हम क्या पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते? हमको जाना सीधा बाहर इधर से। पर हर जगह तो घाट सी है। अबे तो हमने खून नहीं किया है, मतलब उसको मारा नहीं है, तो क्या सीन है इसका। स्टेल्थ है इसमें, स्टेल्थ में खेलना है। मैं चढ़ नहीं सकता क्या ऊपर? चढ़ नहीं सकता क्या? अरे चढ़ के नहीं जा सकता मैं। वाह, कैसे जा सकता फिर मैं? इन लोगों से अबे बात भी नहीं कर सकता मैं, क्या मजाक है ये। मेरे को छुप के जाना पड़ेगा, पर छुप के जाने के लिए जगह ही नहीं है। ये लोग क्या अंधे हैं क्या? मैं इधर से जाऊंगा। अबे तो इधर से तो मैं जा पा रहा हूँ, तो मैं ऐसे निकल नहीं सकता क्या इधर से? ऐसे खिसक लेते क्या दिक्कत है? अबे क्या गचड़ू लोग हैं। मैं उधर छोड़ के इधर से आ गया। अब क्या मेरे को भगने का ऑप्शन देंगे लोग? There's nowhere to run. Hey, buddy, hold still. New character. New character. Stop! Stop! Come with me. फुल एनीमे एकदम से। सीन ही गलत है। क्या मेरे को उसके पीछे भगने का नहीं। So insensitive! You have no idea just how tiring fooling around. Wait. Just who are you exactly? Call me Child. Child? What? So we're supposed to dote on you? No, not at all. It's an alias of sorts. In Mondstadt,
I don't suppose you came across a Senora by any chance? Senora? Child? You're Fatui, one of the Harbingers! Oh, no. Don't worry. I'm not looking for a fight. Senora gave you quite the bad impression, huh? Pfft, that woman. Can't say I'm a fan either. Right. Let's forget all about her, shall we? I'm here to help you. Come now. Don't be like that. I'm not a bad guy. Oh, okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any trouble. Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? I thank you for your knightly nobility. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. And because I had my eye on you the whole time, I know it wasn't you. Someone else was clearly behind it. But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Qixing of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Guess I shouldn't try to deny that. Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. इसने तो हमको इधर ही रुकने के लिए बोला है क्या? अब ये लोग क्या भूल गए क्या मेरे को? ये क्या है? व्यू पॉइंट मेमोरी में रखने के लिए. अड्डू क्या नाम है भाई तुम्हारा? तो सेंसी. Northland Bank. Correct. This bank was opened here in Liyue by Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Teyvat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. iPad है भाई, iPad. Here, mini let me give you this. This is a... iPad में चल रही है अभी. I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Guili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Jueyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. But I have no need for believing, not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Hate to admit it, but your Fatui intel seems alright. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you will go for justice. Justice? The Qixing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How or to hide something else? Hard to say. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long.
but the Adepti can clear you of any wrongdoing. Liyue was founded by the Geo Archon and the Adepti. Of course, it was built by force. Look for them, and be faster than the Qixing's messengers, so you may give your version of events first. If there's anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. What should I put in my mirror? ये तो गलत सीन है, मेरे को उधर जाने का है पर मैं ये जगह खोला ही नहीं। बाप रे, ओपन नहीं किया, अभी तक गया ही नहीं उधर। चलते हैं इसमें खोलते चलो। फाइट बहुत कम लेंगे लग रहा है इसमें। ये स्टोरी चलेगी आज। हम टेलीपोर्ट कर सकते थे पर टेलीपोर्ट करने के लिए उधर ही नहीं कुछ। हम इधर भी फाइट कर सकते हैं। करेगा थोड़ा फाइट कर लेते, थोड़ा क्या जाता है। लेवल भी तो अपग्रेड करना है। गलत सीन। इधर से निकलो। ये पानी के अंदर फंसा लिया इन लोगों ने। आजा। बड़ा आइटम नहीं आएगा। Shiny! 24, 25 पे नेक्स्ट है वो मिशन। अभी तो चुपचाप निकलते हैं। ना डैमेज नहीं दियो मेरे को। मैं ज़्यादा लेवल का नहीं, अभी तो मेरे को डैमेज बहुत गंदा पड़ने वाला है। सुमन, अरे भाई खेलते कैसे इसको? ये स्टोरी बेस्ड गेम है। इसमें ओपन वर्ल्ड पूरा फाइट कर सकते हैं, मॉन्स्टर को बीट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लेयर है पर इसमें वॉइस चैट का ऑप्शन नहीं है। और बड़े आइटमों से अभी फाइट नहीं करनी मेरे को। मेरे को उधर जाना और मैं नीचे कूद गया हूँ। इसमें मल्टी मतलब तुमको दिखाया था इसमें कैरेक्टर, तो अभी मेरे पास 11 कैरेक्टर है। 11 कैरेक्टर खोले मैंने शुरू में 4 दिन के अंदर। मतलब बड़ी क्या बोलते, बड़ी खतरनाक गेम है। मैं इसको अभी तक खेलते हुए मेरे को 4-5 दिन हुए बस। अरे तुम अभी इसकी ग्राफिक तो मजे लो बस। मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, इसको समझा नहीं पा रहा हूँ कैसी गेम है। इसमें अपने को पूरा एरिया मतलब बहुत बड़ा मैप है। ये दिखाता हूँ, मैप दिखाता हूँ तुमको, मैप से समझ में आएगा।
अभी तो मैं कुछ खोला ही नहीं हूँ। ये मैप है इसका, ओपन वर्ल्ड है फुल। ये मैप है इसका, ये बहुत बड़ा मैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है। अभी तो मैं 3% 2% भी नहीं खोला हूँ मैप को, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हमारा स्टोरी चल रहा है, उसके लिए हमको एक जगह पे जाना है। ये है वो, इधर जाएंगे तो स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। तो इतना बड़ा एरिया है ना, इधर जाने में ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी भी 16 नहीं 600 कुछ मीटर है, 600 मीटर समझते उसको। हमको पहाड़ों पे जाना है सामने वाले। देखो तुमको मजा आएगा अभी। ये क्या बोलते हैं, किधर जाना है? अरे उधर जाना है, वो जो लाइट है ना रेड कलर की, उधर जाने का है। गलत साइड पे आ गया। यही तो दिक्कत है, इतना ओपन वर्ल्ड है, मेरे को पता ही नहीं किधर जाना है। रेड लाइट को फॉलो करना है। इसमें एक अच्छी बात यह है, इसको उड़ने की पावर है, इस पे विंग्स है। और पहाड़ पे ऐसे कौन चढ़ता है, ऐसे चढ़ने की पावर है। और इसमें मॉन्स्टर डिफरेंट टाइप के हैं। सबसे बड़ी बात इसकी है, मॉन्स्टर उनको बीट नहीं कर सकते भाई। मेरे पास ये है। ये सबसे क्यूट कैरेक्टर है और सबसे फेमस कैरेक्टर है अभी तक का, और मुझे फ्री में निकला है। जैसे पबजी में निकलता है ना फ्री में आइटम, ऐसे इसके अंदर ये मेरे को फ्री में मिल गया। कैसे चढ़ूंगा मैं उतनी वहाँ पे जाके? टैप टैप। टपाटप कैरेक्टर, क्यूट कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा। ये इधर तो बोलो, इधर तो फाइट लेके दिखा देते कैसे फाइट लेते हैं। ये दो अलग टाइप के मॉन्स्टर, इनका लेवल 28 है। मेरे को फाइट के लिए ये पसंद है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। फाइट में मतलब इसको खेलते खेलते कभी बोर नहीं होंगे सब। इतनी बड़ी दुनिया है ना, ये कभी बोर नहीं होने के। हाँ, और तुम इसमें अपना कैरेक्टर अपग्रेड कर सकते हो। वेपन तुम्हारे पास अनलिमिटेड है। अरे रे, सीन गलत। फुल फाइटिंग दबा के एकदम कराटे, ये नहीं वो नहीं। इसमें हम स्वॉर्ड से लड़ सकते हैं, फायर है हमारे पास। एलिमेंट के ऊपर पूरी गेम बनी है, ऐसा समझ लो। एलिमेंट है इसमें तेरे सारे। ये भी फ्री में निकला है। तुमको ये गेम चालू करोगे तुमको सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा पहले तो खेलने के लिए, ऐसा है इसका सीन। और इसमें स्टैमिना का सबसे बड़ा रोल है। ये जो बार है ना पीला कलर का जो लाइन जा रहा है ऊपर धीरे धीरे, ये स्टैमिना है इसका। तो मेरा स्टैमिना बड़ा रोता है स्टैमिना की वजह से। तुमको ये सब स्टोन इकट्ठा करना पड़ेगा अपग्रेड के लिए, इससे तुम अपग्रेड हो सकते हो। मेरे को जाना रेड लाइट पे और मेरे को उधर ऊपर जाना है, इसके लिए पहले तो
मैं धीरे धीरे करके जाता हूँ, ऐसे स्टैमिना बहुत जाता है जंप लगाने पे। ये आधा गया सीधा। पहली बात तो हाइट बहुत है ना, ये देखो हाइट दिखाऊं क्या तुमको? किधर चढ़ रखे हम लोग, रेंडर तक नहीं हो रहा नीचे का, इतना ऊपर है हम लोग। टॉप में चलते इधर से फ्लाई करेंगे। ओए नीचे नहीं, नीचे नहीं, अभी तो नीचे लुढ़क जाता मैं। इसमें ये वूकोंग वाली फीलिंग देती है थोड़ी ये कैरेक्टर जो भी है ये। तुमको इसका भी स्पेशल मूव करके दिखाता हूँ, पूरा वूकोंग वाली फीलिंग है इसके साथ। दिखाऊँ क्या बोले तो? ये देखो वूकोंग वाली फीलिंग। वूकोंग देखिए मंकी किंग तो तुमको याद होगा, हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे। The truth appreciates any donation. इतना ऊपर ये क्या कर रहा है? ये देखो नज़ारे देखो इधर से, क्या फॉगी वेदर है ना इधर से। क्लैरिटी गेम की ये देखो जरा। कौन सी डिवाइस में खेल रहा हूँ ये? मैं आईपैड में खेल रहा हूँ मेरे। वैसे ये फ़ोन में भी चल जाएगी इससे, पर ये 16 GB की गेम है क्योंकि बहुत ओपन वर्ल्ड गेम है। ये देखो वूकोंग वाली फीलिंग देती है पूरी, देख रहे हो इसको? इससे मस्त मतलब ये छोटी, ये देखो तुम, ये मतलब ये बोल रहा हूँ, ये नेचर देखो एकदम रियल, मतलब फील देगा। देखो पूरा ये बादल है, ये आजू बाजू जितना कुछ है वाइट वाइट, मैं इतना ऊपर खड़ा हूँ। 16 GB, हाँ, पर डाउनलोड करने के बाद है। वैसे 3 GB का गेम है, 3 या 6 GB का गेम है। अगर तुम डाउनलोड करोगे पूरा तब पड़ेगा तुमको 16 GB एंड्रॉयड के अंदर। यार कोई नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन आ रहा है? नहीं यार, इससे नहीं लड़ेगा मैं, ये मेरे को मार देगा, इससे नहीं लड़ेगा मैं। उसके कैपेबल में ही नहीं उससे फाइट करने के लिए। मेरे पीछे मत आ कुछड़ू इंसान, मैं तेरे से लड़ ही नहीं रहा। ये मेरे को पेल देगा, मुझे भगना है इधर से जल्दी से। BGMI क्यों बैन हो गया क्या? हाँ BGMI अभी टेम्परेरी बैन है, परमानेंट नहीं है, तो देखा जाएगा क्या होता है इसका। मैं BGMI इसीलिए नहीं खेल रहा क्योंकि बैन है, फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, पिंग ऊपर हो रही है, तो उससे अच्छा नई गेम में ट्राई करते हैं। नई गेम भी ऐसी मिल गई जिससे मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। ये BGMI के बाद एक ऐसी गेम है जिससे मैं बोर नहीं हो रहा अभी। नहीं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नीचे चल, मर जाता मैं भी। क्या लिख रहा? प्रथम, अरे भाई नया अकाउंट है क्या? नहीं हाँ, वैसे हाँ ये तो नया अकाउंट है, गेम के अंदर तो नया अकाउंट है, पूरी गेम ही नहीं है हमारी, तो अकाउंट तो नया होगा ही। ये स्टैमिना का खेल है। मेरे को इसके अंदर 2-3 चीज़ें तो, पर नए अकाउंट में बहुत सारा माल पानी है हमारे पास। ये गेम का स्टोरी तो ख़त्म हो सकता है पर ये गेम ख़त्म नहीं होगी। इसके अंदर मेरे साथ ऑनलाइन टीममेट जो भी आते हैं ना, क्या ख़तरनाक बंदे रहते हैं, एक बार में ख़त्म कर देते हैं बॉस उसको। जो भी मेरे पीछे पड़ा था ना थोड़ी देर पहले, जिससे मैं फट गई, मेरी फटी थी जो, पर करना हो तो बुला देना भाई। हाँ वो मैं करूँगा ना, ऑफलाइन स्ट्रीम या स्ट्रीम में भी कर लेंगे वो तो।
मैं वही करता हूँ, बंदे आते हैं हेल्प करके जाते हैं। मेरा 24 लेवल हो चुका, 25 लेवल पर नेक्स्ट वो है थोड़ा। मेरे अकाउंट में भी इतने कैरेक्टर हैं, ये जो भी है ये नए नए थोड़े कैरेक्टर मेरे को ये सारे मिल तो गए हैं, पर इनसे अपग्रेड में 2-3 को करके रखा हूँ। ये तो स्टोरी बेस पे मिले हैं, वैसे स्पिन पे मिले हैं। हाँ, मेरे को सेव पॉइंट मिल गया। वैसे ये सेव करने का टेंपल पे जाना पड़ेगा मेरे को। सर्च मेरे को किधर जंप करना ही रहा। ये अपना अपग्रेड पॉइंट, इधर अपग्रेड कर सकते हो अपने हेल्थ। मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं मर जाता है, कई बार मरा हूँ मैं। आग लगा दी मैंने तो इधर से तो। खुल गया अपना एरिया में, स्टोरी इधर से ही कर रहा हूँ। और हम इधर खड़े रहेंगे तो अपने को डैमेज कम पड़ता है, इधर डैमेज पड़ता ही नहीं है, इधर अपने ऑटोमेटिक हेल्थ होती है इधर। ये सीखा हूँ मैं थोड़ी देर पहले। अब मेरे को जाना नीचे। मर ना जाऊँ मैं, गलत कूद गया हूँ बस। हेल्थ गई, देखा, मैं जानता था इतना ऊपर से गिर रहा हूँ, मैं मर जाता अभी। स्टोरी चल रही है अभी। And who might we be? Those that dare enter Dwayun Karst. ये कौन है? Let's take a look at this. A sigil of permission. Many a season has passed since one was last in the presence of such an गेम item. में भी जिससे बात करते देख रहे हो क्या? He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Actually, It's the assassin. They dared to flee here to Jueyun Karst. Sir, we've already stepped too far into Jueyun Karst ourselves. There's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Disturbing our borders. डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको। See them gone. One will not have interruption. अरे फाइट टाइम क्या? फाइट टाइम बोलते पब्लिक। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं मार नहीं सकता हूँ क्या? मार सकते हैं, कुत्ता भर दो भी। तुम मेरे को पकड़ ही नहीं सकते बालक। बालक हो तुम लोग। अबे नहीं, पील दिस। एक मिनट बालक। फेल रहे हैं ये लोग फिर भी। Take the target alive. Bested. To arms. तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे ये लोग फिर भी मार देते हैं। क्या जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है।
निकलो, बोट कहीं पे निकलो। Take this. मेरा इधर नेचुरल वाला है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो। आ जाओ आ Who जाओ goes there? आ जाओ, निकल। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, फाइट करते करते बस खत्म करिए। मैं चीटिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरी पावर है तो। ये ले फाइनल, तेरी भैंस की आँख। Bested. पकड़ लिया इन लोगों ने मेरे को। पेल के रख दिया मैंने सबको। हाँ। Well, Preposterous. Preposterous! The Liua Qixing. Utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the Rite of Dissension? And then place suspicion upon the attendees? Traveler, of the unjust accusations placed upon you, one has become aware. आवाज सुनो एंकर बस तुम। The mind knows its answer. Though one must consult with one's fellows, lest the mind be misguided. Go, take your sigil of permission. Carry with you a message. Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only there exists a conqueror of demons, गलती से a skip कर दिया guardian मैंने। Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. अपन लेवल बढ़ाएंगे, फुल स्टोरी मोड खेलेंगे। तुम 50-60 लेवल कर लियो, सारी स्टोरी खेल लेंगे वहाँ की। अभी किधर जाना है मेरे को? दो साइड जाना है। दो साइड जाने के लिए बोला है इसने। हम टेलीपोर्ट हो सकते क्या उधर? टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, आपको तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। 1 मिनट हेल्थ रिस्टोर मार लेते हैं इस पे जाके। अपने पॉइंट जितना हमने रिकवर किया है, हेल्थ रिस्टोर हो गई अपनी। हाँ चलो, उधर जाने का है, उड़ के जाएंगे इधर से। फिर इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने का है यार, क्या मजाक चल रहा है? जंप लगाने की पावर दे दो इससे हमको। और इसमें उड़ने में स्टेमिना जाता है, ये गलत बात है। अभी स्टेमिना जाएगा इसका, नीचे जल्दी उतारना पड़ेगा इसको। ज़्यादा स्टेमिना तो चला गया इसका। कुछ तो अबे ये देखो लालच दे रहे हैं, मतलब हद है। ये लालच मेरे को चाहिए। ये लोग लालच दिए मेरे को। ये तो चाहिए ही मेरे को। पहले नीचे से चढ़ेंगे। अरे सेव करने के लिए तो है, तो इधर सेव कर लियो इधर जाके। एक और दिया इन्होंने अपग्रेड के लिए, बड़ा अच्छा है ये। जल्दी जल्दी अपग्रेड हो जाता है इधर। There's no end to this. नहीं लड़ना नहीं है मेरे को भी। सारे मेरे पीछे पड़ गए। न मत पड़ो वेंगे भी, पीछे मत पड़ो। अब इधर भी है आइटम। लोग आइटम बोलना छोड़ो, ये मॉन्स्टर लोग गलत मीनिंग। इधर चढ़ जाते हैं। चलो मैं एक बार सेव कर लूँ ना, उसके बाद आगे जा सकता हूँ। यार इतना ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या मैं? मुझे नहीं लग रहा है। बस बस
चढ़ जाना चाहिए ऊपर, उसके बाद ये सेव पॉइंट या फिर मिशन पे चलेगा मैं सीधा। मेरे को नीचे का वो पावर अपग्रेड भी चाहिए था। कितना ऊपर जाने का है? पहुंच गया। इधर कुछ छुपा के रखा है इन लोगों ने। नहीं, फूल है। मेरे को इसके ऊपर चढ़ना है। ये क्या है? रोटेट। मतलब क्या हुआ? मेरे को उधर रोटेट करना था। ये मैं इधर रोटेट क्यों करती हूँ? और इससे होगा क्या? मेरे को जाना तो इधर है, थोड़ा उधर जाके आते हैं। सेव करने का ऑप्शन नीचे है। अरे इनकी ऐसी की तैसी। 28 लेवल गए लोग। हाँ, इसको तोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ चलो। इतनी आधी पावर गई इससे। है क्या चीज़ पर पता नहीं है। तो 28 लेवल का ये भी है। कुछ मिला क्या हमको? हमको बात तो इससे करनी है शायद से। पर इसको वे तोड़ ही देते हैं, क्या देख सकते हैं। साथ में खेल सकते हैं क्या है ये? फ्रेंड, हाँ फ्रेंड बुला के खेल सकते हैं अपना, पर बातचीत नहीं कर सकते इसमें। फ्रेंड आएगा तो भी बात नहीं कर सकता है। ये हमारा एक अलग अलग वर्ल्ड रहता है, इसके अंदर सबका अलग वर्ल्ड रहता है। जैसे तुम नया नया चालू करोगे तो तुम्हारे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मैं रहूँगा, ऐसा। क्या कर सकता हूँ? चेंज करते हैं। जब तुम चालू करोगे तुम एक लेवल जाओगे और मेरा लेवल 21 है। तुम्हारे मैं मतलब एक तरह से हीरो रहूँगा तुम्हारे वर्ल्ड में। मैं किसी को भी फेल सकता हूँ। कौन सा चाहिए? पर्पल वाला। Ooh, you're taking me up. Come a little closer. इसमें अलग अलग पावर से ये क्रेट छुपा के रखते हैं। इतने मक्कार लोग रहते हैं। क्रेट के लिए मैंने चेंज किया जो इसके बिना लेवल अपग्रेड नहीं होगा। Have mercy, O mighty Adeptus. I beg you. Show mercy upon me and my brother. हम अगर साथ में खेलेंगे भी तो स्टोरी नहीं चलेगी हमारे में। Who are you? What's going on? We asked you first. Oh. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. बताओ मैं गॉड ऑफ वार खेलूँ क्या? बताओ स्ट्रीम पे गॉड ऑफ वार कौन सी 4 खेल सकते हैं? एमुलेटर खरीद के। Sent here to rescue me and my brother. What is he talking about? Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I,
We only came here because our family is poor, and we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. इसने तो अलग काम दे दिया कि इसके भाई को बचाना है करके। It was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti, and this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, 2 messengers come to my aid. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. Thanks be to the Adeptus of Mount Hulao and to their messengers. Never will we be so foolish again. भाई COP ऑन करके बुलाना। ठीक है, पहले स्टोरी करने एक बार ये। When you speak like that, you actually make a pretty convincing Adepti messenger. मेरे को उसके बाद लेवल अपग्रेड करना ये स्टोरी खत्म होने के बाद। Paimon was gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. So he said that. So let's follow the path down from here. इसकी आवाज and make क्या sure है? to be on the lookout for Amber on the way. इनका डैमेज बड़ा वैसा है, ये फायर से टूटते हैं। ये एम बोट बोल लो, पर इससे डैमेज तो मेरे को ही होता है। कुछ नहीं दिख रहा है, पर मैं इधर जा सकता हूँ क्या? मेरे को ये किधर जाने के लिए बोल रहा है पता नहीं। 78 मीटर, हाँ नीचे जाने के लिए क्यों बोल रहा है? इधर जाके मेरे को देखने का एक बार। नहीं खुल सकता है, अब जाते हैं चलो। पर नीचे जाने से अच्छा तो पहले मैं सेव करना चाहूँगा, सेव कर ले ताकि इधर ही। और ये रहा ना सेव पॉइंट इधर ही। मैं एक विश करना चाहता हूँ, 1 मिनट विश करेगा मैं पहले तो। भी कर सकता हूँ क्या मैं? मेरे को एक नया कैरेक्टर चाहिए, मेरे को ये चाहिए वैसे तो। मैं इसके लिए एक विश करूँगा। ये जो फर्स्ट है कुछ अच्छा देना, पहले नॉर्मल चीज़ देंगे। स्वॉर्ड, अपने पास 4 लेवल की स्वॉर्ड है, वैसे भी स्वॉर्ड नहीं चाहिए था मेरे को। मैं पर इसकी ओपनिंग करूँगा, मेरे को ये चाहिए, मैं ये खरीदूँगा। मुझे मिल सकता है क्या? स्किप कर देते हैं। अरे लोग स्वॉर्ड ही देते रहेंगे ज़िंदगी भर। मैं किसी करेक्टर को अपग्रेड करता है, 1 मिनट। मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ।
एक विश कार्ड मिल चुका है, मैं इसको भी अपग्रेड कर सकता हूँ। If you ever want to trade tactics. इससे भी मिल गया मेरे को एक कार्ड। चलो कोई नहीं, इनसे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मैं इसको अपग्रेड करूँ? नहीं, अभी नहीं करूँगा। Cleo is afraid, girl. मेरा 2 विश कार्ड है, क्या खोलें फिर? तो मुझे कैरेक्टर ही चाहिए। पर अच्छा कुछ नहीं देते मुझे अच्छा कुछ दे दो यार। क्या वेपन लेके करूँगा, मेरे को इसमें भी नहीं आ रहा है। इसका डैमेज 1 मिनट, लेवल 3 3 रैंक का वेपन है, पर इसको अपग्रेड करने के बाद मैं यूज़ करूँगा। इसका डैमेज 102 है, इसका डैमेज ज़्यादा है, तो 200 प्लस डैमेज कर सकता हूँ इसका भी। मेरे को करना क्या, इसके भाई को ढूंढना है। क्या घुचड़े लोग हो गए तुम लोग। अबे मेरे को ये लेना है, ये दे दो मेरे को बस। अबे गिरा दिए। इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने मेरा एक प्लेयर को मार दिया है। इनकी ऐसी की तैसी सही में। मैं चुपचाप से एक चीज लेने वाला था, मैं इनको मारने वाला भी नहीं था। अभी तुम्हारा कुत्ता भर देगा। तुम लोग मेरे को छू भी नहीं सकते राम तो। इन्होंने मेरा फ्री में एक कैरेक्टर मार दिया, मतलब बुद्ध है। हाँ, कुछ और काला जादू करेगा। और इनका मेरा एक कैरेक्टर मार दिया, इतना प्यारा सा कैरेक्टर जो था। इसको रिवाइव करना पड़ेगा। मेरे को ऊपर जाने का क्या मजा है कि ये देखते हैं। पहले इधर टेलीपोर्ट करके हेल्थ कर लेता हूँ मैं पूरा। कितने बड़े बेवकूफ लोग एकदम से, ये ढंग से मार कर ही तो नहीं देते। Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for. देखा, अच्छी बात है। मैं उधर टेंपल पे प्रेयर कर लिया था पहले। अरे इधर जाने के लिए बोल रहा, पर इधर करूँगा क्या मैं? मेरे को इधर ये तो समझा दो, करना क्या है मेरे को इधर। 1 मिनट उससे बात करनी होगी शायद से। है किधर वो? Please help me rescue my brother. All I know, almighty mess. एरिया को देखने का तो है, पर कैसे देखूं मैं, क्या कर सकता हूँ सर?
ऐसे इसका भाई किधर होगा मेरे को कैसे बताइए क्या काम दे रखा मेरे को। मेरे को ऐसी चीजें में पल्ले नहीं पड़ता है, शादी में सीधा ही कर रखा है। कोई बताया ये कैसे किया है किसी ने। लॉक एरिया बताने को दे रहा है ये। एक मिनट जरा मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ किसी का चैनल पर जाके क्या किसी के वीडियो पे कैसे करते हैं। Where are you? Cleo is a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? बस एक मिनट रुक जाओ। These bombs so heavy. Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish taste so good. क्या पानी की आवाज आ रही है एकदम मस्त। पर करना क्या है अभी तक मेरे को नहीं पता है। These bombs so heavy. कितना कमजोर हूँ मैं। मेरे को लग रहा है सारा तोड़ना पड़ेगा। सारा तोड़ूंगा किसी ना किसी में इसका भाई होगा। I'm liking the look of this.
अरे इनको तो वैसे वो करना है, एम करके मारने का है। मैं पहले ये कर लूँ, पहले ये मिशन ही कर लूँ, उसके बाद ये सब करूँगा। किसी ना किसी में तो होगा ही, मरा हुआ या कैसा भी। हाँ तू इधर आ, तू पहाड़ से नीचे नहीं जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मार मेरे को। हवा हवा में दूंगा तेरे को खर्चा। आजा आजा, नहीं हो पा रहा क्या? ये सीढ़ियाँ, इधर से ही जाने का होगा। अरे सबको हवा में देने वालों, खर्चा करने वालों। ये तो अपने आप नीचे चलेगा, बड़े वो होते। आजा आजा आजा, मेरे को जला दे, आजा चल बोट। साथ साथ में इसको ही फोड़ो। ये तो ऐसा मिशन देते ना कि जिसके अंदर कुछ बताया ही नहीं हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लोग नीचे गिर गए, इसलिए मैं चेस्ट भी नहीं खोल सकता हूँ। अबे सब नीचे गिरा दिया उन्होंने, सबको बात है, छोड़ो कोई नहीं। बजाओ टून बजाओ, ये दोनों खेल दो। एक सेकंड, मेरा फोन नीचे गिरने वाला था अभी तो। इनको मारने का सिंपल था, इसको लो। क्या कहाँ आने वाला है? ये ले, अखंड डैमेज देती है। ये ले, मेरे को मारा तूने। ये लोग फायर से ज़्यादा डैमेज दे देते हैं, ऐसा कुछ। मैं पहले यही करता हूँ, मैं तोड़ते तोड़ते देता हूँ, किसी ना किसी में जरूर निकलेगा। एक मिनट भाई, चैट नहीं पढ़ा मैं, चैट देखा ही नहीं मैं, रुक जाओ एक मिनट। Explosion inside city wall. हाँ यही है मेरे पास। Explosions can hurt people. बार बार यूज करने से इनका मल्टीपल अटैक। अरे ज़्यादा पावरफुल है ये ब्रेक करने में बड़ा पावरफुल है। वाह क्या बात है, एक ही बार में खत्म। ओए नहीं, मार देगा। ये बड़ा पावरफुल है इसका फायर। पर ये मिशन होगा कैसे, मेरे को कोई यही तो नहीं पता चल रहा। स्टोरी मोड आगे ही नहीं बढ़ रही है, इन पे आके अटक गया हूँ मैं। तुझे तो इससे पहलेगा मैं। इधर जा। 28 लेवल का है, सील्ड लेके हो गई। ये तो शायद से कैसी, अरे ये रहा इसका भाई, मिल गया। What happened? You rescued me. ये सब तो मैं खुद डाल And have सकता you seen हूँ। my brother? His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. MD ओए क्या भाई, क्या हो गया?
I just hope he didn't get trapped in Amber too. He made it to the top. That means he should be okay. कर स्टोरी मिल गया ना मेरे को करने के Thank लिए। you. मेन I will स्टोरी head up to find my करना brother now. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. अपने पास थोड़े नए कैरेक्टर भी आ चुके हैं अभी तो। अब अपने को ऊपर जाना है वापस से, पर थोड़ा नीचे भी माल पानी है, वो ले लेते हैं। लेवल 24 मतलब 25 होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी करेंगे। आजा आजा। इनको फायर से ज़्यादा डैमेज होता है, फायर से ज़्यादा डैमेज होता है। फायर ये लोग सहन नहीं कर सकते। जैसा थोड़ा खेलना सीख गया। क्या लगता है कि बीजीएमआई वापस आएगा? मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि पबजी की आदत तो उसके लिए भी ऐसा चल रहा था, तो बहुत मुश्किल है बीजीएमआई को वापस आना। पर कोई नहीं, होप रखेंगे, आ ही जाएगा। अपना भी उसमें थोड़ा माल पानी है। एक सूट है, सब बर्बाद चला जाएगा अगर वो चला गया तो। पर ये गेम भी अच्छी है, इससे मैं बोर नहीं हुआ। मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, मैं कम से कम 1 हफ्ता हो गया इस गेम को खेलते खेलते। बोर नहीं हुआ अभी तक मैं। इस गेम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा। मुझे ये मिला है, आगे और मजा आएगा भाई। मेरे को ये मिला, ये वुकोंग वाली फीलिंग है इसके अंदर, वुकोंग वाली फीलिंग दिलाती है। इसको भी अपग्रेड किया थोड़ा। मेरे लिस्ट में कैरेक्टरों की कमी नहीं है भाई। जी है। तो इन लोग के नाम ऐसे है ना। ये वो मंकी किंग की फीलिंग दिलाती है, ये जब ये वाला अटैक करती है मंकी किंग के बीच ऐसे रहता है। ये वुल्फ्स का साउंड आ रहे हैं। मुझे ये भी मिला है अभी तो, ये कैरेक्टर। ये तो स्टोरी के हिसाब से मिल रखे हैं। ये भी मिल चुका है मेरे को। मस्त है भाई। एम्बर, ये तो ये भी स्टोरी के हिसाब से मिला है। ये मिला, मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। इसके अटैक क्या मतलब मस्त दिखते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ये अपग्रेड हो चुका है थोड़ा। इसके वाली विंड की पावर थी, भी इस पर कुछ और आ गया है, जो कि मेरे को इतना कुछ पसंद नहीं आया। पर Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated Adepti. What? No. I mean, like everyone else, we've heard that there's an Adeptus living in Mount Hulao. इसको अब छोड़ दूँ? Regular folks like us would never have the chance to अरे meet तो them. मेन No कैरेक्टर way. यही है। Unlike you guys, you're Adepti messengers, so it's a whole different story. कोई नहीं, नया कैरेक्टर मिलेगा तब छोड़ेंगे इसको, बस स्टोरी के लिए रखेंगे। We have trespassed in the realm of the Adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty Adepti messengers. इसको ढूंढना इतना मुश्किल था। अच्छा, चेंज कर दूंगा टीम। रुको, चेंज करता हूँ, रुको। इनको जाने दो, चेंज कर देते हैं तुरंत। Boy, it'd be super helpful if we actually were Adepti messengers.
'Cause it seems like this Adeptus has got a real temper problem. But it's not like we've done anything wrong, so... 40 लेवल का Who पर इसको dares किया मैं. trespass on my mountain? ये कौन है भी? Foolish mortal, come forth and receive your punishment. ये तो गलत सीन है. फाइट करना कैसे? रुको जरा, पहले चेंज कर दे. कौन कौन सी कैरेक्टर रखने हैं? कैरेक्टर में जाएं पहले. ये क्या खोल रहा हूँ? पार्टी सेटअप. कौन से अच्छे कैरेक्टर हैं इसमें? अभी मेरे को 3 तो कैरेक्टर ही अच्छे लगते टॉप के. ये स्टोरी का है इसीलिए रखा हूँ इसको. एम्बर को मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको. इसको रख ले. Wish me luck. अभी कैसी लग रही है टीम? एक अपने पास शायद से भी कैरेक्टर नहीं है. ये सही है. सही है ना ये 4. कैली है क्या मेरे पास? ये रही छोटी वाली. हाँ सारे एलिमेंट की तो है. ये तो सही है. पर मैं भी हेल्थ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ. मेरे पास हेल्थ तो बतेरी पड़ी है. मैं हेल्थ ही नहीं लगाता. मेरे को सिंपल सा टावर पे जाना होता है. You intrude upon the sanctity of Mount Hulao. You destroy the amber of my mountain. And you free a thief whose freedom is not yours to give. इसको अपग्रेड कर लेंगे फिर हेल्थ देने के लिए. The thieves' ignorance was an affront to the Adepti, but your actions are an abomination of the highest order. Wait! We can explain! A sigil of permission. What? In the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. Few were made then, and thousands of years on, fewer still remain. इतना स्लो क्यों बोल रहा है? Speak. One shall listen to the matter which brings you here. Then one shall verify the truth thereof. 44 तक यूज किया था. अच्छा मेरा लेवल तो अभी 24 है. You would be wise to speak the truth. एक For हफ्ते में Liyue is 24 not so far पहुंचाऊंगा. from here that one would be easily deceived. Rex Lapis assassinated? At the rite of dissension? What mortal in Liyue, nay in all the world, would conspire to commit such foul treason?
Or perhaps the more pertinent question is, what power in this world could aspire to achieve it? Rex Lapis charged the Adepti with the protection of Liyue, and we have always honored this duty. But now, alas, Rex Lapis, gone. Traveler, of the matter you have relayed, one has become aware. One now knows why Moon Carver has sent for us. Once one has dealt with certain matters here that require my attention, one shall convene with the other Adepti. Paimon can. Adepti always have magical powers in storybooks. Seems it's true in real life too. You know, like how grass is actually Adepti hair, and rivers are actually Adepti saliva. There must be something similar going on with the amber. Your nonsense knows no bounds. This amber is produced by a flower that one has planted here, called the karst crawler. दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही The थे. majority of the plant is hidden underground. When stepped on, it produces amber to trap the invader. After taking up residence here, one planted many karst crawlers to ensure that the tranquility of the mountain would remain undisturbed. Oh, so the amber is alive? Correct. Thus, one may not leave this place in its current state, for fear of the risk to innocent lives in one's absence. One will depart as soon as one has attended to this matter. भागने के लिए बोल दिया इस जगह से. रहती बात है, भाग जाओ. दिखने नहीं पहले. कंप्लीट हो चुका है. अभी किधर जाने का है? इधर. अरे मैं ये एरिया अभी तक मतलब पिया नहीं हूँ. दवा बोलता हूँ तो अभी तक मैं ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया हूँ इस एरिया को. तो मेरे को ये भगा रहा है इधर से. भाग जाओ. अभी उस माउंटेन पे चढ़ने का ऑप्शन आएगा. तो ऑप्शन क्या आएगा? चढ़ना ही है. मैं इसको नहीं कर सकता क्या छिड़कानी? जरा देखे नीचे उतर के. I found that 158 streamer. No need to add become I'm lazy. करने का क्या है? क्या चेंज करना है इसको? फाइट के अंदर इसको चेंज करने का है या क्या करना है? 1 मिनट. अपग्रेड होगी क्या ये देख लो पहले. लेवल अपग्रेड कर लेते हैं अगर होती है तो. A dance from Barbara. ये कौन सा वेपन है? बुक है. इसको अपग्रेड कर सकते हैं. अपग्रेड. अरे तो लेवल 1 की बुक थी ना इसकी. मैं इसको लेवल 1 की बुक दे रखा हूँ. क्या बात है? इससे अच्छा जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसकी चीज़ इसको पकड़ा दो. ऐसा. La da 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 da. TTDS क्या होता है भाई? रुको जरा. स्विच. क्या नाम लिखा गया किधर? तो
है ही नहीं, क्या देंगे? अच्छा ये अलग है, मेरे को कुछ मिला है इसका लेवल 3 का। अपग्रेड कर सकते हैं इसको। अटैक पावर 102 होगी इसकी तरफ। अच्छा 1 सेकंड देता हूँ। मैं ये वेपन अपग्रेड कर रहा हूँ थोड़ा। वेपन देता हूँ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। अपने को ये नया चीज मिला है, ये एक्सचेंज करना है इससे। All the standing around is making me so sleepy. अच्छा अटैक नहीं कर सकती है ऐसा कुछ। हेल्थ के लिए भी मेरे को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। चलो कोई नहीं, दे दिया अब तो इसको ये। हेल्थ वाले को चलते हैं, हेल्थ करेगी ना ये, मतलब खेलो। पता ही नहीं है मेरे को वेपन के बारे में भी उतना अच्छा कुछ। मेरे को जाने का है इस पहाड़ के उधर जाना है, मेरे को क्रॉस करने का। इधर कुछ है क्या? इधर अपग्रेड है किधर? तो पहाड़ पे होगा लग रहा है। टॉप पे है ये। छोड़ो मेन स्टोरी करते हैं, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। हाँ इसके ऊपर चढ़ना है, क्लाइम करो क्लाइम। गिरियो मत। एक और लास्ट किधर है इसका? ये रहा। More treasure, more treasure. इसके ऊपर जाना मेरे को। La la la. मेरे को 2 साइड में दिया सेव पॉइंट। Observe! एक 1000 का डैमेज दिया इसने।
I'm liking the look of this. जैसे मेरे को नीचे एक्सप्लोर करना है, पर मैं ऊपर जाके सेव करके आता हूँ इसको। अगर मैं मर भी गया तो इधर से वापस आऊँगा। नीचे शो कर रहा है, नीचे जाना है क्या मेरे को? तो इन्हें ऊपर से जाकर देख आएंगे। ये रोटेट करने का है। फिर रोटेट। कुछ नहीं हो रहा इससे। सेव करने का ऑप्शन। ये रहा सेव करने का ऑप्शन। क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है? Hey, who put this table here? They've even set it ready for dinner. There's a wine jug and everything. Ooh, they even have the guests' names carved into the seats. Here sits Retainer. Here sits Guizhong. Here sits Rex. Maybe Rex is short for Rex Lapis. But Paimon has no idea about Guizhong. As for Retainer... That's it! When Mooncarver was going through the names of his Adepti buddies, he said there was one called Cloud Retainer. So this must be where Cloud Retainer and the other Adepti have their dinner parties. How about we cook up some extra special dishes for the Adepti? We're sure to get Cloud Retainer's attention that way. But what do Adepti even eat anyway? Paimon has no idea. People must make offerings here all the time. Guess all we can do is look around the area for any leftovers. Maybe that'll give us some ideas. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try some sticky honey roast? सही है इसका अलग खतरनाक सीन है। अभी किधर किधर जाना है? 78, 71, 73। पहले इधर चलते हैं। थोड़ा इससे ही फाइट करके देखेंगे, अगर फाइट होती है तो किसी से। कैसी है फाइट में? It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paimon bets they were making an offering to the Adepti.
Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. What do you get if you cross matsutake and raw meat? Go, Barbara, go! Yeah. इससे फाइट करने में मजा आने वाला है। Go, Barbara! मेरे को स्टैमिना का कुछ करना है, स्टैमिना बढ़ ही नहीं रहा है इनका। ये मैं गलत यूज कर रहा हूँ स्टैमिना का। Someone has definitely cooked here before. Do you think they were making an offering? Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. तो क्या क्या चीज है इनके। Go, Barbara, go! पानी में जाने पे मर जाता भी तुम्हें। Whoa, the ground is covered in flour. What a messy chef. खाना बनाना है। Seems there's meat in this pot, but Paimon can't tell which kind. Do you think इधर बना whoever लेंगे cooked क्या this made it as an offering to the Adepti? अच्छा वो नोट का इस्तेमाल करना है। Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. कुक नहीं कर सकते इसमें हम। कुक के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, अरे फायर चलाने का है। भूल गया, मना क्या कर रहा है। I'm so curious. What kind of dish uses only flour and meat? वही आग लगाना था पहले। मैं भूल गया था। इसमें भी इतनी डिटेलिंग दे रखी है ना, आग लगाना है, ये करना है, वो करना है। आ जाओ नीचे आ जाओ। तुमको कौन इतना बर्बाद करेगा। इनको स्टोरी खत्म होने के बाद ही करता मैं, नहीं रहा नहीं जाता है। मेरे में स्टैमिना कम है, अगर मैं तेजी से गया ना मैं मर जाऊंगा इधर जैसा लग रहा है। नहीं पहुंच जाएगा। अपग्रेड तो थोड़ा तो अपग्रेड हुआ ही है। कहाँ चला गया ये? क्या मैं दो चीज़ तो बनाया ही नहीं, 1 मिनट बना के आया। खाना बना के ला के रखने का है ना इधर तो।
हेलो, क्या करने गया है इसको? मैं तो बना चुका हूँ शायद से। मैं कुछ मिस कर दिया क्या? मेरे पास वो है ही नहीं, तो आइटम तो है ही नहीं मेरे पास। बनाया क्या है मैंने फिर? What would you call it? एक मिनट देख लेते हैं भी। La la la. Maybe there's even more buried below. Boing boing boom. Jumpy dumpty go. Boom. मेरे को ये बनाना है। और ये भी। किस पे क्लिक करना है? ये तो कुछ सीन हो गया लग रहा है, कुछ मैं मिस किया मैं। क्या ये क्या हो गया सीन? ये कैसे करना है भी? हम दोबारा कर सकते हैं क्या इसको? पर ये तो स्टोरी है, दोबारा भी कैसे करेंगे हम लोग? La la la. Da da da. These bombs. खुद ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। Woo. La la la. ये दो गलत सीन है, पता नहीं क्या करना है अभी। इधर खाना रखने का ऑप्शन दे रहा है, पर खाना कैसे रखें मैं उधर? बनाना तो पड़ेगा। What do you get if you cross Matsutake and raw meat? तो
What do you get if you cross Matsutake? पर करना कैसे, मेरे पास तो है ही नहीं। किसी को कुछ आइडिया है क्या कैसे होगा ये? मेरे को जाने के लिए उधर बोल रहा बार बार। हाँ खाना तो बनाना है, पर बनेगा कैसे वो तो नहीं पता ना मेरे को। खाना बनाना है, बनाना तो है, मेरे को भी पता है, पर बनाना कैसे है और वो भी क्या चीज़ बनाना है। 1 मिनट इनका फ़ोटो देख लेता हूँ, जो भी होगा। ये तो ये वाइट कलर का बाउल होना। ये पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। ये सिरदर्दी वाली चीज़ें दे देते, ये मेरे को पसंद नहीं है। सब में कंप्लेन करेंगे। What would you call a dish that's made from snapdragon, lotus heads, and tofu? हाँ वही तो, खाने का सामान ही नहीं है। पर क्या चीज़ चाहिए इसके लिए? ये है ना, मेरे पास एक ये नहीं है। अरे ये तो बंद तो गया है, ये कुक करने का है। कुक करना है तो मेरे पास। मैं इतना चिंता के ले रहा हूँ, अपना इन्वेंटरी नहीं ध्यान से देखा। ये चीज़ है वो, और इसके लिए मतलब किधर गया? इसके लिए मेरे को एक ये चाहिए, और ये पानी के पास मिलता है। मेरे पास बाकी सारा सामान है, बस ये चाहिए मेरे को, ये आइटम। ये पानी के पास मिलेगा। मैं इतना परेशान हो गया था, ये तो इधर किधर ही मिल जाएगा। पानी के अंदर मिलता है हमेशा ये, पर किधर मिलना चाहिए। एक और बना लिया मैं, वो रख के आ जाओ पहले तो। और रिवर है क्या? हाँ उस साइड में रिवर तो है। रुको जरा, इसको रखते हैं। ये नहीं, ये हो गया, इसको भी रख दो। एक लास्ट डिश। वैसे इसको मिलना है तो इधर किधर चाहिए था, पर मिल नहीं रहा है। कोई नहीं, हम लेके आते हैं दूसरी साइड जाके। रिवर है ना साइड में। अरे नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। ये रिवर है, रिवर का रिवर तो दिख नहीं रहा है। रिवर ही तो है। Cleo is a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? These bombs so heavy. सोच रहा हूँ नीचे जाऊँ नहीं जाऊँ।
क्योंकि इधर तो है नहीं ये, मिलता तो या इधर ही मिल जाता, उधर इधर है नहीं, क्यों नहीं है पता नहीं। पानी तो ये भी है, होना तो इधर चाहिए ही इसको। मिल जा, नीचे नहीं जाना पड़ेगा मेरे को, मिल जा। इधर ढूंढने जाना पड़ेगा, पता नहीं किधर तो। क्या पता तो इन्हीं के पास ही रुपए। एक मिनट देख लेते हैं, इधर देखते हैं, सर्च करने का ऑप्शन है क्या? इसको फोड़ के देखो, इसमें है क्या कुछ? नहीं है। नीचे 3 चेस्ट है। एक मिनट, जगह का नाम है क्या किधर वो? तो कहाँ मिलेगा ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को, जगह का नाम में क्या चीज़ है वो? मैं भी रास्ते में चुग के तो आया था एक, पर अभी इस टाइम पे मिल नहीं रहा मेरे को वो। मेरे बैग में तो होना चाहिए वो चीज़। हाँ, यहाँ पे कहाँ दिखेगा? हम इसमें शॉप नहीं है क्या? शॉप इधर से परचेज कर लेते हो। हर पर वो जगह है किधर इसमें? मुझे नाम भी याद नहीं है ना उसको तो। क्या अपनी सिटी के पास देखा था शुरू वाली में? मैं किधर तो ये बहुत सारा देखा था। मेरी सिटी वैसे मैंने 3 खोल रखी है। पहली तो अपनी जो पहले मेन कैरेक्टर मतलब मेन सिटी थी, दूसरी ये सिटी, जहाँ पे ड्रैगन मर गया है। ड्रैगन मरा। अरे मैं वो सिटी भी भूल गया कौन सी थी। टेलीपोर्ट करके आया हूँ मैं इसीलिए। क्या गेमर बनूंगा मैं, मेरे को सिटी नहीं याद है मेरे कौन से में था। अच्छा एक मिनट, इधर सिटी थी ना ये, इधर किधर में ही तो थी। जहाँ ड्रैगन मरा था, जहाँ ड्रैगन किधर मरा था? मेरे को किधर मरा था वही नहीं पता। मैं ये सिटी में से तो बहुत पहले आया था, निकला था।
अरे ये तो रहा, इतना दिमाग लगा रहा हूँ, ये तो है। इधर क्या तालाब के पास मिलेगा ना? इसी में तो मरा था ड्रैगन। तालाब की तरफ, पर मिलेगा किधर? ये बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। इनके पास खरीदना है, तालाब उलाब पे मिलता है ऐसे ही फ्री में। तालाब और नदी में नहीं। हाँ तो शॉप पे मिलता है क्या? शॉप ऑफ कोई तो शॉप होगा। ऊपर है। इन पे ये सब तो स्टोन बेच रहे हैं। शॉप पे नहीं मिलता है, ऐसे ही मिलता है ना, बस ये बता दो। मैं बेफजूल में शॉप ढूंढता रह जाऊंगा नहीं तो इसकी। हाँ ये तो रही जगह, ये मिल गया मिल गया मिल गया। मिल गया, एक और ले लूँ, पता चला कम पड़ जाए। मैं इनके तालाब के अंदर घूम रहा हूँ और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तोड़ लूँगा सब कुछ इसमें से। बस कंप्लीट हो जाएगा अभी तो। टेलीपोर्ट कर लेते हैं। तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, पता ही नहीं था मेरे को उधर भी मिलता है। अभी मैं इसके लिए नीचे जाता तो मिलता मेरे को। कुक करना है ना अभी तो, पहले कुक कर लेते हैं। कुक करने के लिए किधर गया? हाँ कुक हो गया। मिस नहीं कर दूँ मैं गलती से, बस सेकंड नहीं लेना अपने को। पहले ये फुल होने देते बाहर। मेरा भी ज़्यादा लेवल बड़ा नहीं है। सेलेक्ट अभी कौन आएगा इधर? छुपना उपना है क्या? हमने सब कुछ बना दिया ना, तो छुपना होगा शायद इसमें शायद, या मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाता हूँ। क्या करना है? फाइट लेने क्या? फाइट टाइम, फाइट टाइम। मेरे को ये अपग्रेड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइट में थोड़ा पिट सकता हूँ, पर मेरे पास दूसरा कैरेक्टर तो है, 2 कैरेक्टर पावरफुल है। क्या करना है?
One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. बचा के क्या रखूंगा मैं इनको? Break a leg and step. Flags up and step. Look, that platform is moving. So that's what this button is for. Da-da-da. Confess! मेरे को इनसे नफरत है, पीछे वार करते ही लोग। Jumpy dumpy. अभी किधर जाने का है पता नहीं चल रहा मेरे को। मैं जिधर का है उधर तो नहीं जा रहा हूँ। There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? 24 लेवल 25 लेवल का होने वाला हूँ मैं। 90 सेकेंड है। मेरे को इसको स्विच करना है शायद से। मैं कंफ्यूजन है पूरी। इधर चलते हैं। ऊपर मेरे को तबाहीदार मामला पानी लग रहा है। बस बड़े आइटम नहीं आने चाहिए फाइट के लिए। मेरे को बड़े आइटम तो फाइट के लिए फायर याद रखना है क्या मेरे को? 1 2 3 अरे ये क्या है ये? इसका एम कैसे काम करता है? मेरा दिमाग किधर कर दिया इसने तो। फर्स्ट लास्ट सेकेंड पहला, दूसरा, तीसरा। चैलेंज कंप्लीटेड। एक बॉक्स अनलॉक हो चुका है शायद से। आई रहा। सेंटर लास्ट बस। साठ सेकंड देता है ये। अरे अटका मत भाई। ये अब आएगा हार्ड वाला।
मैं सोचा बड़ा ही वाला मिल गया मेरे को। अब फोकस करना है कौन सा, मिडल वन। इसमें कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 75 सेकंड देता है। 1 2 3 4 5। दिमाग तो थोड़ा चली गया है। ये है ज़्यादा लूट टूट। अभी मेरे को वापस इसको घुमाना है। La la la. इन लोगों ने इतना इंटेंस टून चला रखा है, क्या नाम, क्या बताएं। फ्लाई करना है क्या इधर? अच्छा मेरे को इससे लड़ना था, मेरे को ये देखना था कैसे होता है। अच्छा ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा मेरे को उधर ही जाना है। Go, Barbara, go! मैं इससे फाइट करके देखता हूँ, इससे कुछ होता है क्या। दिया तो होना तो चाहिए। 1 मिनट ठीक है। क्या इसमें नहीं, दूसरे में, पर ये चला के देखेगा। बंद हो गया। मेरे को दूसरे में मारना था। तुक्का काम करता कभी कभार। तुक्का लगाया मैं, तुक्का। ऊपर जाने का है। मेरा 25 लेवल होने वाला है, इसके बाद वो स्टोरी चलेगी। One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. ये थर्ड है। The one before you is the Adeptus Most Cloud powerful Retainer. beast. Now speak of the matter which brings you here. आपको चाइल्ड मिलना था ना। अच्छा वो बंदा मेरे को मिलना था। You surmise correctly. अब वो नहीं In मिलेगा fact, क्या? even Gui Zhang and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. अब मेरे को चाइल्ड नहीं मिलेगा वो। This place is huge, and there are so many अच्छा उससे mechanisms. फाइट होगा Do क्या? you really have this कोई whole नहीं, place जीत to जाएंगे yourself? उसमें थोड़ी होगा। पर वो बंदा खेलने को मिलता। What's it even मस्त for? था। Did you build it as your private mechanism workshop or something?
It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wish to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Rex Lapis. Assassinated? How can this be? Such a heinous crime! Who would dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Liyue first, then convene with the other Adepti. Wait, what? Did you just say squash Liyue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. It is as you say. We have protected Liyue Harbor under the leadership of Rex Lapis for 37 centuries. But in the face of this coup, by nefarious actors, exceptional measures must be taken. Yikes! Quick, you gotta think of something. She wants to squash Liyue flat, and it doesn't seem like she's bluffing. Exactly what Paimon was gonna say. We made all that delicious food and gave every last bit of it to you. We were hoping you might help Liyue out, not wipe Liyue out. Or at least let's, discuss it first. Can't hurt for you to get a second opinion. Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. The people of Liyue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and... गलत सीन होने वाले अभी तो। 25 लेवल हो गया मेरा, तो रैंक हो गई मेरी। ये सब अभी तो छेड़ना भी नहीं है। चैप्टर 2 पे क्या, चैप्टर 3 चैप्टर 2 हम लोग हो गया। ये खेल सकते हैं हम अभी, पर इधर से पहले बाहर निकलेंगे तब खेलेंगे। Dodoko, where are you? These bombs so heavy. खेलेंगे अभी, बहुत हार्ड है ऐसा क्या?
तो स्टोरी करते हैं पूरी, फिर जब हार्ड है तो कौन खेलेगा। मैं इधर से पॉइंट नहीं लिया था, वाह। स्टोरी करते हैं फिर तो। मैं इधर जगह पहले सेव पॉइंट ले लेता हूँ, मैं वो नहीं लिया हूँ। वापस जाकर ऑफर करूँ, एक मिनट। है क्या मेरे पास कुछ? मैं ज़्यादातर इसमें स्टोरी पे ध्यान दिया हूँ, मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं किया अभी तो। अरे 2 है सिर्फ, और 2 से 1 लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ाओ इसकी, मेरे को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है बस। ये लॉक है मेरे में, ऐसा क्यों? ये 8 का 8 ही है स्ट्रेंथ। मेरा स्ट्रेंथ इतना घटिया है ना, क्या बताऊँ। अच्छा मैं एक वो कर सकता हूँ क्या, 5 पॉइंट का मेरे विश करने में अपग्रेड कर सकता हूँ मैं इसको। मेरे को ये बीटल चाहिए, बीटल पता नहीं किधर मिलेगा ये। बेसिक अटैक एनर्जी रिचार्ज, मैं इसको भी अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ। स्विच वेपन 4 स्टार का इसमें भी है, मैं इसको भी अपग्रेड नहीं कर सकता। मेरे पास, मैं तो भी नया नया हूँ भाई, मेरे को कुछ इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। पर ये मस्त कैरेक्टर है, कोई कुछ भी बोलो भी। तो गया C2। भाई थोड़ा पता चल जाएगा मुझे, ये तो अच्छी बात है। इधर क्या मिल रहा है? हेल्थ तो ये नहीं, ट्राई करेंगे हम भी। एक मिनट, इससे फाइट करते रुको जरा। ये क्या है? डैमेज नहीं करने दो अपने आप को। सही है। इसका डैमेज कम है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर ये है, और ये है, क्या पता है। इनसे बाद में बात करेंगे, मेन पहले करते हैं।
यार इस गेम की क्वालिटी कितनी मस्त है. Oh, this seems to be weighing Shu in. Compared to Joyun cars, this place seems basic. Are we really gonna find an Adeptus here? Let's take a look. Paimon reckons he'll be on the balcony. Doubt we're gonna find him in the kitchen. Da-da-da. Yay, shiny! Woo! La la la. सबसे पहला काम ये है अपना. स्टोरी तो बाद में करेंगे, पहले ये कर लो. तो ऊपर ये क्या हरकतें कर रहा हूँ, मैं भी नीचे गिर गया. Oh, he's not here? क्या लोकेशन है? To the blind, everything may not be as it appears. ये कौन है? New character. A sigil of permission? You came prepared. Though this only prevents me from hurting you myself, doesn't stop you from getting hurt in other ways. Paimon doesn't get it. Too much contact with our world is breaking the rules. Mortal souls are not as robust as those of Adepti, nor can your blood carry this level of adeptal energy. It's for your own good. Leave. Now. ये तो भगा रहा है अपने को. आते हैं. इतना ऊपर आने का क्या मतलब है? Wait a sec, we came here to... Paimon's peeved. All he does is think about himself. Paimon wants to give him an ugly nickname. But if you take off an Adeptus, the only thing you'll probably ever find in treasure chests is cabbages. Blech. Guess we should go ask the boss lady of the inn about just how she manages to talk to Adepti. बॉस के पास जाने का ही. बॉस के पास. Oh, you've already met Xiao. Not bad. Not often he's in a good enough mood to agree to see people. That's his good mood? Oh yes, the Adepti are very hard to come by. Many people go their whole lives praying to them, never once actually getting to see one. When the Geo Archon built Liyue, he borrowed power from the Adepti. But most of them only know how to protect Liyue by fighting. So for many millennia, it has instead been humans who have led Liyue. You really know a lot, huh,
boss lady. It's not boss lady, it's just boss. Anyway, seeing as you have the favor of the Adepti, things should, well, if you want to know my opinion, if you keep Xiao in a good mood, things should be okay. Good mood? Can't really imagine what a good mood looks like for that vigilant yaksha. Will be interesting, won't it? अच्छा अभी फाइट के लिए सेना जमा कर रहे हैं. I've never seen him smile either. अच्छी बात है. How about this? You go see the chef for a bowl of almond tofu and a plate of whatever it is you're best at making. Almond tofu is one of the few human foods Xiao likes. The other dish is up to you. ये बंदा हमको चाहिए पर ये आना नहीं चाहता है. What do you think you're the best at cooking? Wow, never heard of that one. Paimon wants to try it. But if we're gonna be cooking for an Adeptus, perhaps the satisfying salad would be the safer choice. $14 meters. Can't you see I'm on a break, kid? Scram! Whoa, this chef guy's service is about as good as that Wagner guy's back in Mondstadt. I see. If it's for the boss, then guess I don't have a choice now, do I? Story But my करना heart's पड़ेगा. not really in it right now. Not enough to make a dessert as painstaking as almond tofu. And why is that? A fencer's hand must be steady. So too must the hand of a chef. 45 के बाद से फाइट होती है सिर्फ. But my hands, अभी तो 25 लेवल है मेरा. they're not steady. बहुत चाहिए. Because a traveler once told me that this inn 30 चाहिए 30. is haunted. And then just now, in the kitchen, I saw something. Something not right. This chef looks so intimidating, but speak of ghosts and he becomes weak. I keep thinking, even Wangshu Inn isn't safe. I can't keep a steady hand for something like almond tofu. All right, in the name of high-quality almond tofu, we need to go check this kitchen out. पर 1 मिनट 25 लेवल हो चुका है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं इसको भी. अरे किधर गया? I wonder when I'll be Level as up. tall as my big sister. इसको अपग्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए मेरे को समझ लो. अपग्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए. अच्छा मैं जिससे फाइट करता हूँ उसी को अपग्रेड करते हैं. पर इसमें मेरे को ये बीटल चाहिए. बीटल किधर मिलता है नहीं पता मेरे को. इसको अपग्रेड करना है मेरे को पर ये अपग्रेड नहीं होगा. अच्छा उन दोनों को पर वो तो मेरे पास है नहीं. मेरे पास सिर्फ एक कैरेक्टर है इनमें से. मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ. नहीं So heavy. 40 है. अपग्रेड करने के लिए मेरे को ये सब चाहिए. मैं इनको खरीद भी नहीं सकता हूँ.
मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी, नहीं कर सकता मैं। छोड़ो। There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. 34 मीटर। मेरे को पहले थोड़ा और पावरफुल होना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को नीचे जाना है। एक मिनट में इधर से नीचे जा सकता हूँ ना। Doesn't seem to be anything. ये क्या है? गोश्त। ये स्कैन कर सकते हैं हम। हमको इधर से निकलना है। ये क्या है? कुछ खास है क्या? उठा लो। नई चीज़ है, उठा लो। फिर से इस पे जाना है। What? You saw it too? There really is a ghost. What? How could I? पट्टी पड़ी है इसकी तो। Okay, so he's useless now. What do we do? Forget it. Let's just go see the boss lady again. इस पे चलो। ये बताएगी कुछ तो। Scared of something so insignificant. Hard to believe. You don't seem that afraid of ghosts, boss lady. Gods and ghosts. I've seen it all before. Come to think of it, others don't seem to know there's an Adeptus here at the inn except for the boss lady. Say any more and you'll be divulging my little secret. Right. Best you two be off. Go see to it that that little ghost doesn't go scaring anybody else. Not that I'm ordering you around. It's like the Adeptus said. Mortal souls are not as robust as those of the Adepti. So as not to be harmed when dealing with the Adepti, you can start by practicing with that ghost. There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Go take a look at it. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same Witness Sigil formation. मेरे को क्या नीचे जाना है अभी? 73। अरे इधर से उठा लेते हैं ये सब। न्यू रेसिपी मिल चुकी है अपने को। कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। हमें इधर क्या करना है? छोटे बड़े बंद करने। क्या करें, वो तो आदत है अभी। ये क्या है?
ये क्या चीज़ है, उठा नहीं सकते हम इसको? अभी इसमें क्या करना है? इसमें कुछ तो सब कुछ उठा लेगा, हमें कुछ नहीं छोड़ेगा किधर को। अपने को इतना बड़ा एरिया दे रखे है, करना क्या है? सब कुछ चुग लूंगा, कुछ नहीं छोड़ने का। सामने देखें, किधर सामने है ये? चेस्ट मिल गई, कुछ मिले चाहे ना मिले, चेस्ट छोड़ूंगे नहीं। See, just follow my intuition. आई पॉइंट से देखो, आई पॉइंट बोलते हैं, आई बटन। एक तो ये चीज, सब कुछ चुग लो पहले तो। इधर गोल्ड कॉइन पड़ी है, लेवल 4 की गोल्ड कॉइन है। अरे उसने तो मेरे को नीचे ही धक्का दे दिया। ये क्या मक्कारों वाली हरकतें कर दी इन लोगों ने। बॉक्स गायब कर दिया इन लोगों ने। रुकना कैसे मेरे को फिर? ये भी मिस हो गया मेरा। कुछ टाइमिंग चलती है क्या? अरे उड़ता क्यों नहीं है ये? मैं बटन दबा रहा हूँ पर इतना छोटे बटन है ना, वो दबते नहीं जल्दी। अरे जल्दी। I'm liking the look of this. हाँ ढूंढने का है, पर कैसे कोई मिलेगा कैसे उसमें? एक मिनट में जाकर ढूंढता हूँ, मजाक मस्ती बात में। बर्फ ढूंढनी है क्या? बर्फ फॉलो पॉइंट से। अरे फॉलो पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ पर ये दिखाई ही नहीं रहा है ना, वही तो दिक्कत है। इनसे कुछ होगा? मेरे को ये, अगर मैं इधर से हटता हूँ मेरे को किधर जाने का ऑप्शन देगा? मेरे को उस रॉक पे जाने का ऑप्शन दे रहा है। एक मिनट में इस रॉक से ये तो दिखा रहा है, पर इसको पिक नहीं कर पा रहा मैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट, ओए ये क्या है? Secure is crucial.
कैसे होगा ये? यहाँ पे तो हो रहा है पर ये ग्लो भी कर रहा है। वो ग्लो तो करता है, मैं इधर जाता हूँ जब। हाँ पर हो ही नहीं रहा ये पॉइंट्स। ज़्यादा इधर जाने पे हट जा रहा है। ये अलग सिर कैसे होगा भाई? तू हो जा। अभी तो सेम है ना, अभी क्यों नहीं हो रहा कुछ? चप्पी कुछ नहीं शो कर रहा, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। कैसे करना, कैसे ये? इतना दिमाग लगा लिया, इसके बाद दिमाग लगा कैसे? अब इसके पीछे अगर हल्का सा और होगा ना, ये खत्म हो जाएगा। एक मिनट इसके पास जाके देखता हूँ। तो ये ड्रामेबाजी है। ये इसके ऊपर खड़ा होकर देखना है। वाह क्या बात है। उसके ऊपर खड़ा होकर देखना था, मैं उठा रहा था उसको। हो गया, थोड़ा दिमाग तो लगाया, मैं सोचा उसके ऊपर खड़ा होकर कर लेते हैं आज। ये रहा गोश्त। अबे अब इसको जिंदा मत करियो, उससे फटेगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसको मार भी नहीं सकता मैं। अबे मक्कार नीचे उतर जा, ये हरकतें कर रहा है ऊपर चढ़ के। तो खुद ही मर रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये ऊपर चढ़ के बैठ गया एक तो। Let the show begin. इसको मारने के लिए मेरे करेक्टर ही नहीं है ढंग के। है ना, तू उधर चढ़ के लड़ा, मैं इधर चढ़ के लड़ता है। Your grand finale. And step.
Chi. Don't know. अबे हल्ट कैसे कर पा रहा है इसको? ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, तू इधर ही रह। कोई नहीं, मार मार, ऐसे ही रहे। अबे कहाँ चला गया? हाँ नहीं, इससे ही मैं मार दिया। सही है, बहुत बढ़िया। Haunting things isn't nice. Little girl, are you listening? Chilly Joe, frilly Joe. Now listen here, young lady. Oh. यंग लेडी बुलाने पे सुन लिया उसने। Okay. Dusky Ming won't tease the travelers at the inn anymore. आवाज क्या खतरनाक है उसकी। Next time, you can come play with Dusky Ming. If you don't come and play, Dusky Ming will come find you. हाँ, अब वापस जाने का है उधर। क्या बात है, चलते हैं। डैमेज कर दिया इसने तो। पीछे जाना है, मैं भी कहाँ आगे जा रहा हूँ। 1 मिनट, टेलीपोर्ट तो कर सकता हूँ मैं इसको। टाइम बचाने के लिए तो मैं टेलीपोर्ट वाला इधर का। What? You really got the ghost to promise to stop haunting the inn? Wow, you really are something. I am in your debt. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl of almond tofu. Haha, my hands are steadier than ever now that she's gone. टॉप पे जाना है। You two, again. Wait, don't go disappearing again. What's this? ये कैरेक्टर मेरे को चाहिए खेलने के लिए। जो सामने खड़ा है। It's your favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities.
I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Our god is the god of contracts, after all. Wait! Paimon still has one last question. That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So really, Wang Shuin was looking after her. Really keeping a wide range of business going, huh? चौदह सौ मीटर जाना है, 1400 किलोमीटर किधर जाने का? वापिस आ गए हम विलेज के अंदर। इधर से हम लोग भगे थे, वापस इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको टॉप में चढ़ना है, टॉप पे। कोई रास्ता है क्या? दीवार से चढ़ेंगे हम। सभी लोग देख रहे होंगे ये क्या कर रहा है लोंडा। चढ़ नहीं सकता मैं इसके ऊपर, इधर भी नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या मजाक है। जबरदस्ती सीढ़ियों से चढ़ाओ तुम लोग मेरे को। You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? अच्छा, I see. Huh. Moon Carver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. मेरे को वो कैरेक्टर Some of चाहिए these खेलने names के have लिए। never come up in the intel मेरे the टीम Fatui में। gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liu Qixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a lid on things. अरे मेरा आईपैड गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo-Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo-Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came here! If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over! Oh? You're trying to find the Seven? And just why might that be, pray tell? Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? But I can help you with that too, you know. Really? Give me some time. Time to find someone.
Someone who can help you break through this stalemate. Huh. Truly fascinating. The harder they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts. If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet, yes? अभी क्या करना है? स्टोरी खत्म? विश करते हैं, चलो। मेरे को एक कैरेक्टर चाहिए इनमें से। मेरे को ये रेड, क्या नाम है इसका, पता नहीं। मेरे को कैरेक्टर चाहिए और मेरे को नाम नहीं पता है। वहाँ तेरे कैरेक्टर मिलने वाला है क्या मेरे को? नहीं, उम्मीद भी ना रखो इसको। मेरे पास स्वॉर्ड से नफरत हो गई इससे, इतनी बार मिल गई ना मेरे को। फाइंड इन द वाइल्ड। बेसिक अटैक 102। वैसे ये है क्या? मेरे को अपग्रेड कर देता हूँ इसको भी, कुछ तो होगा इससे। मैं जिस पे अटैक होगा वो अपग्रेड करूँगा। डैमेज है फुल मैक्स। अटैक किधर है? अटैक, ये अटैक है मैक्स से पहले से। पर बस ये तो है, इसको लेते हैं। मैनुअल करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक मिनट, इसको हटाओ। हाँ, वो
वो कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। मैं ये अटैक इसका फुल करना चाहता हूँ, इसका अपग्रेड कर करके। इससे इसका अटैक का वो बढ़ेगा, मतलब डैमेज बढ़ेगा कुछ तो। मैं मैक्स करके छोड़ूंगा, लेवल 4 का ये। अटैक के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। लेवल 9 149 का अटैक है। लेवल 10 160। इससे होता कि मुझे ही नहीं पता। इसका अटैक पावर बढ़ेगा, क्या होगा या डैमेज कम होगा। ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? अभी नहीं रिक्वेस्ट लूँगा, अभी पहले स्टोरी करेंगे। फुल मैक्स कर लो इसको पहले। लेवल 13। मेरे पास वो कम हो गया। पर मेरे को जाना किधर है, मेरे को ये नहीं पता। वेट until following। ये वेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी? मैं एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ किधर गया। ये तो रॉयल पास है। हम ये ट्राई करके देखते एक बार। नहीं होगा, चुल मची थी मेरे को ट्राई करने की, होगा ही नहीं। टाइम आगे कर लो। मेरे को आगे करना नहीं आता है, आगे कैसे करते हैं मेरे को बताओ, करता मैं। Hello, nice to आगे कहाँ से करते हैं? nice to meet you. पता है क्या, बताओ जरा। आगे मेरे को नहीं पता किधर से करते हैं। सेटिंग में जाऊं, अचीवमेंट है, कुछ मिल गया। कलेक्ट ऑल करने का नहीं है। सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है? सेटिंग में तो मैं पहुंच जाऊंगा 2 सेकंड में। सेटिंग में जाना है, ये टाइमिंग है ना, इसको क्या छेड़खानी करनी है? कंफर्म? ऐसे बढ़ता है आगे टारगेट? पर मैं बहुत ज़्यादा कर दिया हूँ मुझे नहीं पता। आफ्टर क्या लिखा है? आफ्टर टुमारो। सही किया हूँ या गड़बड़ कर दिया? आना चाहिए भी तो। आ गया। मुझे नहीं पता था, मैं तुक्के में गया हूँ, मेरे को तो डे आगे बढ़ाने वाला। ये सब भी हो सकता है इसमें। किधर जाना है? टॉप पे जाने का वापस से रास्ता इधर से। अबे क्यों गिर रहा हूँ मैं भी? इतना जल्दबाजी करके जा रहा था, मैं ऊपर गिर ही गया।
छिपकलियों की तरह चढ़ गया मैं तो ऊपर। Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. Ahem. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. इसको हर चीज पता है। The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. इसका मजाक उड़ा दिया मैंने। Welcome to the Northland Bank. 8 चलो। Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hi. अबे ये तो खुद ही है, सेम लग रहे हैं दोनों। Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. Overreact कर रही है देखो। The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer?
The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? A wise decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the seven. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. After having experienced the land of the absentee Archon, Traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng Funeral Parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations
shall be to obtain some prized Noctilucous jade worthy of a deity. Truth hurts! What are you staring at? Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... What was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade Noctilucous jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucous jade? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated! But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger, the patterns, the facade. These are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words,
The bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers we once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the Hilly Churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. La la la. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine.
trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Bring it on! Flag slide! Observe! Yeah! There's still soup in here. These hilly churls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use Pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. Keep moving! That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls? They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Blow them all up. Da da da. Fracture! Hey! You don't want to do this. Cyclone! Jumpy, jumpy, go! Strike is one! And step!
head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते क्या? जाने के लिए उधर से दिखा रहा है, वैसे भी कलेक्ट ही नहीं हुआ। थोड़ा हेल्थ रिकवर कर लेते हैं हम अपनी। किधर जाना है? इधर। ऑफर कर लो। अरे मैं वापस रिटर्न हो गया। मैं देखा चैट में। कोई नहीं, पहले ये कर लेते उसके बाद वो कर लेंगे वापस। अभी तो खरीदने आए हैं, इससे खरीद लेंगे। रियल है। You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Huh? No, it wasn't that one. Paimon remembers that it wasn't very bright. Think a bit harder. Exactly. That's the one Paimon remembers too. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyue Qixing and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora. My apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait! Didn't Child give us some advance funds earlier? That's a relief. Have a look, It's fine. Just enough for half price. Though to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single Mora. I will do my best. You have my thanks.
We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. The Liyue Qixing have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients.
can't beat the atmosphere here in Liyue. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens. Just look at the abundant foliage here. And these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on— Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the Seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the Seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis.
If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? I will wait for you near the Statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan! She's master of the Liyue branch, right? I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Qingxin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qimei. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yingar? Oh, as in scent of spring Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere.
Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? You mean Wan Min Restaurant? Good choice. Let's go. Adventurer, think you can last a round against me? Not yet. Try something new at the Wan Min Restaurant. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Try something new at the Wan Min Restaurant. Should I save this money or invest it? This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready.
This is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist, and it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. Sure, but
Aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why is he gotta be so secretive this time? All things. Youngster, are you here to admire the flowers? What happened? Back in my day, people said that glade, if they heard beautiful, but if they heard. So that means these flowers feel. Yes, the rumors of Rex Lapis. Some say it was this harbor is like a. Well, I shall say no more. Borrow some. Apart, but it was not originally mine either. That I was a vain beauty when I was young, and he could not dissuade me. It has been still these old. That's right, Grant. And all right, children. do you? Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it.
Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. ये क्या हो गया? ये मैं मर कैसे गया था? मैं सोचा भी नहीं इधर से गिर सकते हैं हम। Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Chillian Karst? Why would she stay in the city? अबे हद है, परेशान कर दिया इन लोगों ने। That really hurt. Gee, they're picking on me. Break a leg. Protect us.
Ready, steady, go! Jumpy Dumpty, go! La la la! How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me... All right, that'll do. Come on out now, children. Oh, in and out in no time. An adeptus. Oh, as to whether I am one or not. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepts. But no matter what, to cry, now that you have... So, why would I? Oh? Well, we haven't met well. Oh, and that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Indeed. This is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, when a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our... Next. Ooh, Paimon loves... No, I will explain it to you. But our... Oh, sure. Curiouser and curiouser.
you're here. The 7 kites. Yes, thank you. It's rare to see customer. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun. To finely crafted toy I have made. Indeed. I took the liver. As for the kite. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to these markings of tree and justice flows across the... Well then, Granny Shan, I shall take these back. Well, allow me. Hey, it's Child! No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When he knows a great deal about money. Or perhaps you could... How is he not that? Child, the rite of parting requires help. Oh, by the way, take this bag of money. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment. What should I try this time? Hiring help? Sure. Adventure. Eh? That's not hard. A most fair price. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Let's see. 5 geocrystal flies. Yes. A full day of odd... Whoa, that's Hero of months? Well, you may never have heard of this. That's too little. Hardly a fair... That's too little. This is too little. I'd consider it if it was a bit high. This price'll do. No loss to me for a day's work. Oh, help? So what's the job? Let me see. No problem. Done. Oh, come on. That's too little. Oh, come on. Let me think. Deal. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. You think you can buy us off with some... Well... What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after?
Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. Just what is this about? The atmosphere. Next, we need some everlasting incense. Is everything... Everything is... Now, if you'll excuse... Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. These bombs. I wonder when I'll be as tall as my... The receptionist. Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. You can't even reach the counter. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders. I'm afraid that she's probably right. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only... Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. Go to Mount Tianheng.
find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. I don't believe so. The Guizhong Ballista, at least, I have heard of before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinhong by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli. Apparently not quite. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. What the heck is a cocoa goat? See, just follow my intuition. It's huge! Paimon can talk, but how do you operate this thing? Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me, as I recall, if we can retrieve the spare... So... I have with the parts in hand. Where is that supply post? Here, post... Maybe there's even more buried below! One moment. It is done. It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we
nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders. This area's supposed to be chopped. Last time we approached them, a few of us risked our... The next thing you'll... Tut tut. It is not we who... You're open! Truth hurts! Confess! Should replace my hammer. लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। कितनी देर करेगा? जितनी भी देर करूँगा उसको लेके जाए। अरे उसको जाने लायक नहीं है, उसके यहाँ थोड़ा निकल गया, इसीलिए आज वो क्लास नहीं। अरे तो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अभी बोले जा रही है बोल रहा हूँ क्लास नहीं गया, ये नहीं गया। अभी आ जाऊँगा मैं थोड़ी देर बाद। हाँ Fracture! Yeah! Huh. I wonder which criminal mastermind just protested their innocence in court. A liar by the sounds of it. The hunter becomes the hunted. Strike is one. And step. I got careless. Flag fly. Break a leg.
Picked the wrong test subject. Try! Fry! Picked the wrong test subject. I got careless. Blazing delight! Cyclone! I got careless. You're open. You're open. You're open. You're open. You're open. You're open. Dodge this. You're open. Keep moving! We got a situation! Truth hurts! Flags up! And step! Let's dance! Come on! We can do it! You're open. Flag fly! And leap! You're open. Flags up! And step! These lowlifes did Troubling ourselves over Oh yeah, that! a search using the Gwei. What's more, a Which means... Paimon wouldn't go... We- Good idea. We did... What a sight to behold. The sun, so warm and radiant.